In this chapter, we are going to discuss not audible. Okay, one second. Now, am I audible? Okay, okay, okay. Done, done, done. Okay. So, what I'm saying, this is our first day, and we are going to start unit and dimension. Okay, first of all, just let me know, do you know the basics of unit dimension and errors and I will say vernier calipers, screw gauge, everything basics you know or not? Varun, Archana, and what are other names? Abhinay, Vaishnavi, Varun, Prashant, Tom. Basics are clear. Okay. So we will start and I will ask you some very fundamental questions first. Error analysis and instruments, no. Okay, Aditya. We will cover. We will try to cover, maximize this session. Now start. First of all, this is the thing that actually you can find dimensions anytime if you know the how to find the dimensions. But still, there is a requirement. You can still remember few of them, like this Boltzmann constant, Planck constant. Anyway, all of these you can remember all the time because most of the times now in questions Planck constant is involved. And if you are trying to find its dimension at that time of exam, it will waste your time. So first of all, try to remember all these dimensions. Take a screenshot and try to remember it. Then dimension, if I talk about dimension में कुछ functions, very basically if I say, just tell me, for example, if I say something is written as sine 2 omega t, then what will be the dimension of this whole function? What will be the dimension of this whole function? Dimensionless. Dimensionless, very good. Someone has said dimensionless, very good. And let's suppose if I say this is written as 2at. T is time, A is some unknown quantity. What will be the dimension of A? T minus 1. T minus 1. Okay, very good. That means you know that trigonometric functions are dimensionless.
And this thing is also dimensionless. Very. I think you know this basics very well. There are certain other functions, logarithmic functions, they are also dimensionless. So I will not go into that. I just want to check whether you know this or not. Now you are comfortable with it, so I am moving further. Next thing, what are the uses of dimensions? Can anyone say in very quickly what are the uses of dimensions? What is principle of homogeneity? Derive an equation. Very good. Nikhil is saying very good. To verify formula. Very good. Correctness of the formula. Okay, that means you know only same dimensions can be operated. Very good. You know the basics. Now that means dimension part is clear to you. We will give you some questions to check, but right now your basic is clear. That's what I am trying to check. Now moving further. Someone is concerned about error part. So if I say what are errors? Basically, questions in errors comes with propagation of error. Like you are adding some quantities, you are subtracting few quantities. Then what will be the error? This is known as propagation of error. So questions generally come from propagation of error. Don't hesitate. Main purpose of this class is to discuss the questions. हम लोग questions ज्यादा discuss करने वाले हैं. So I am just giving you an idea. Anyone can tell me. For example, if I say there is a quantity x which depends on a and b, this power let's suppose p, this power let's suppose q. Then what will be the error in the measurement of x? You can turn off your mic and you can speak. P into delta A upon A plus Q into delta B upon B. Okay. Do you know the basic from like how it is achieved? ये कैसे ड्राइव किया हमने? Differentiation. Okay. Log and differentiation. Very good. So ultimately, whenever जब भी क्वेश्चन एडवांस में आएगा ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो इस तरीके से फ्रेम किया जाएगा कि either we have to differentiate it directly. If it is directly we can easily get the differentiation, otherwise उसका हम log लेंगे and then we have to differentiate it. सो जिन लोगों को भी एरर नहीं आता है उनसे मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा कि जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे एडवांस में जब क्वेश्चन आएगा एरर का, तो वो हमें दो तीन बातें याद रखनी होंगी. जो भी फंक्शन हमें गिवन होगा उसका हम पहले लॉग लेने की कोशिश करेंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होगा. फिर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे. तो बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए कि हम बेसिकली वो फॉर्मूला ड्राइव कैसे किया गया. So we will take log and then we will differentiate it. This is the first thing. Now tell me, for example, in a measurement, किसी मेजरमेंट में मुझे लिखा गया कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज 2.01 मीटर. Then only with this data, what will be the error in the measurement of length? You have nothing extra is given. सिर्फ ये दिया है कि length you have measured is 2.01 मीटर. Then what is the error in the measurement of length? Rohit is saying 0.01 meter. Least count. Very good. That means the conclusion is very good. In most of the questions, question itself will give error in the length, error in some quantities and ask in some other quantities. But if error is not given, then what you can conclude that least count of the instrument of the measurement is your error in that measurement. So from this measurement, what you can see, what is the least count?
0.1 meter is the least count. If I say length is equals to 1.00 meter, then what is the error? In fact, I will say 1.000 meter. What is the error? 00. Ajay Chauhan is saying 00 or 0.001. What is the error in this? Delta L is equals to 0.001. This is the error. Done. I think this is clear. ओके. सो हमें एरर के बारे में एक बात, दो बातें पता चली. फर्स्ट थिंग कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लेके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सेकेंड थिंग जो हमें पता चली वो ये पता चली, अगर किसी एक क्वांटिटी की एरर नहीं गिवन है बट उसकी वैल्यू गिवन है, उस क्वांटिटी की वैल्यू तो गिवन है बट एरर उसमें मेंशन नहीं है, देन हाउ वी कैन गेट द एरर? बाय चेकिंग द लीस्ट काउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू. आई थिंक इट इज क्लियर. No, this is not going to be foundation batch. I am just trying. Few of you have told me that error part is they don't know about error part. Someone has asked me. That's why I am discussing these things. After that, we are straight moving towards the questions directly. Okay, so you can try this question. You have some 2 minutes of time and just tell me what you are getting. Okay, 1 and 3. Now I am audible, na? Samriddhi, option you are saying option two. I don't think that is correct. Check again. Vaishnavi is saying 1 and 3. Okay. Hariom ji is saying option one. Okay. Let's read the question.
Question is saying a student uses a simple pendulum of exactly 1 meter. What is the meaning of exactly 1 meter? That means this length is completely accurate. There is no error in the measurement of this length, 1 meter, to determine g, the acceleration due to gravity. That means they want to calculate g. He uses stopwatch with the least count of 1 second for this and records 40 seconds for 20 oscillations. Now, for this observation, which of the following statement is correct? Now, delta t here, capital T is what? Time period. Error in the measurement of time period, they are saying either 0.05 or 1 second. So first of all, we need to find what is going to be the error in the measurement of time period. Now they are saying for 40 oscillations, no, for 20 oscillations, they are taking 40 seconds. Correct? Now can I say time 40 by 20? Is it correct? I can say these are the n oscillations. This time is t. So what is the time? 2 seconds. I think this is clear. Or you can say time period is equals to t by n. Now error in the measurement of t is delta t by t is equals to n is a constant term delta t by t. So you can from here you can say delta t is equals to capital T into delta t by t. Now delta t is what? They are saying that least count is what? 1 second. That means 1 by total time t is what? 40. So you can say delta t is equals to t is what? 2 by 40. 2 by 40 means 0.05. This is your first option, which is correct. अगर किसी को इस बात में प्रॉब्लम हुई तो एक बार बोलेगा दैट टाइम पीरियड डेल्टा टी कितना एरर है, टाइम पीरियड में कितना एरर है, दैट इज 0.05, विच इज ऑप्शन नंबर 1. That means option 2 is automatically wrong. Now coming back, what is the error in the measurement of G? What is the formula of time period? T is equals to 2 pi under root L by G. root L by G. And we want error in the measurement of G. So if I square it, it will become G is equals to 4 pi square L by T square. Is it correct or not? I can write further. What is the error in the measurement of G? Delta G by G is equals to, can anyone say what it will be? Delta L by L plus 2 delta T by T. Put the values. Delta L by L is what? 0. 2 times. Why it is 0? Can anyone say? Exact. Very good. Delta T by T is what? 1 by 40. अरे ये पता चला डेल्टा टी बाई टी इज व्हाट 1 by 40. So delta G by G is coming out to be 1 by 20, and option is in percentage. For percentage error, you can multiply with 100. So that will become 25. That is 5%. So percentage error in the measurement of G is what? 5%, which is again option number. सर वो जीरो क्यों हो गया था? What? Who is asking? सर वो जीरो क्यों हो गया था डेल्टा एल अपॉन एल? हाँ, डेल्टा एल के लिए बोला है कि दैट इज एग्जैक्टली 1 मीटर. एग्जैक्टली मीन्स देर इज नो एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ.
That's why delta L becomes 0 in this case. If delta L is 0, that means delta L by L whole is 0. That is exact value. Like 4 pi square na. This is also exact value. That's why we are not considering it. हमने इसको भी ignore किया. So which option is correct? Option 1 and option 4. These two options are correct. किसी का कोई डाउट है इसमें? Okay. So we are moving further. This is very fundamental question. Just to check your understanding of vernier calipers. Answer, please. Anyone have basic doubts in vernier? किसी का कोई बेसिक फंडामेंटल डाउट हो वर्नियर में, तो हम 5-10 मिनट उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं वर्नियर के बारे में. ओके 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 ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. फर्स्ट आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन. वर्नियर का बेसिक. ओके ओके. 1/n+1. रोहित इज सेइंग 1/n+1. ओके. पहले थोड़ा सा एक बार बेसिक डिस्कस कर लेते हैं वर्नियर का. थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम लेंगे. नॉट मच, बट वी विल डिस्कस हम बेसिक्स ऑफ वर्नियर. दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन ऑफ वर्नियर. Okay, so we will discuss something about vernier very quickly. So be attentive now, everyone. What I'm saying, what is vernier? First thing, it is a device which can use to measure distances that you know. Now, basic funda is it has a main scale. This is your main scale, and this is your vernier scale. Main scale and vernier scale. n² / n+1, Vaishnavi is saying. We will check Vaishnavi once again after few minutes. Now, there are basically, if I summarize the things very quickly, two types of verniers. Generally, we call it in physics. One is normal vernier, another is abnormal vernier. Normal vernier means the vernier scale. Okay, first of all, if you don't know the terminology, then I will say this main scale has divisions. Can you notice? This main scale has divisions. The minimum division or the least division, we call it main scale division. Getting my point. Terminology I am getting clear to you. And this vernier scale also has some divisions, and the divisions on it we call it vernier scale divisions. First thing is clear. Now, what is normal vernier? In which one main scale division is larger than vernier scale division. This is your normal vernier. Like, and what is abnormal? In which vernier scale division is larger than main scale division. Try to note down everything. Now I will say, I will ask you whether it is abnormal or normal. I will say 9 MSD is equals to 10 VSD. Normal or abnormal? Abnormal. Abnormal. It is abnormal. Clear na? Hey, why abnormal? Think again. Who is answering abnormal? Varun is saying abnormal.
Think again, Varun. It's normal. Okay. Can I say MSD over VSD is equals to 10 by 9? What does it mean? MSD has larger divisions than the VSD. Okay, are you getting my point? When main scale division is larger as compared to vernier scale division, that means it is a normal vernier. And when opposite to that happens, that means it is a abnormal vernier. Now, if I say 10 MSD is equals to 11 VSD, what is this? Normal or abnormal? Whose divisions are smaller? Main scale divisions are smaller as compared to the vernier scale division. हाँ. Now tell me, 9 and 7. Normal. I think clear to everyone. So now, after this, we need to know how to read these vernier calipers. First, we identify whether it is normal or abnormal. First, we check it by checking the MSD and VSD relation. After that, we will check how to measure. Generally, they will give you the main scale division value. Generally, most generally, I'm saying not every time, it is your normal meter scale. Normal meter scale that you have in your rooms or classes, whatever, it is generally, I will say, 0.1 centimeter, the main scale division. Generally, 0.1 centimeter it measures. And let's suppose it is given that 9 MSD is equals to 10 VSD. Then what will be the least count of vernier scale? What will be the least count of the vernier scale? I will say VSD is equals to 0.9 MSD. This value may change. You have the time. If I take 0.1, then what is the vernier scale division? That is 0.9 into main scale division is 0.1. So that will be 0.09. Clear? Very good, Samriddhi. Now, what can I say? What is the vernier scale division is this. So what is the least count of the instrument? MSD minus VSD. If MSD minus VSD you do, can anyone tell me what it will be? 0.1 minus 0.09. What it will be? 0.01. 0.01 centimeter. This is the least count of the vernier. Now tell me, is this formula always valid? Or there are some cases in which this formula is not valid? Can anyone tell me? For normal only. Okay. That is very true. For normal vernier calipers, we can use this formula only. Very good. For abnormal cases, we have to go with the basics. So I will tell you how to go with the basics. So two things are clear: normal, abnormal, least count of the instrument, least count of the vernier. Next is how to take the readings. Done. If I say how to take the readings, first thing is, let's suppose this distance you have to measure.
and you fix it in the jaws, then first thing you have to notice, this is your vernier scale, this is your main scale. First thing you have to focus, where is the zero of the vernier scale? All this data will be mentioned in the question or in the diagram format. So first thing you have to focus, where is the zero of the vernier scale? It is just ahead of 1, 2, 3, 4, 5. In fact, 6. It is just ahead of 0.6 mark. So anyone if can remember what is the reading of vernier? Anyone remembers the formula? Main scale reading plus n into least count plus minus एरर. आई थिंक यू नो दिस फॉर्मूला ना. जिसको नहीं पता है वो फॉर्मूला नोट करेगा सबसे पहले. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रीडिंग ऑफ द वर्नियर? व्हाट इज एमएसआर? मेन स्केल रीडिंग. व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग? द पॉइंट जस्ट आफ्टर विच आपका जीरो आ रहा है वर्नियर का. अगेन आई एम सेइंग इन हिंदी, आई एम सेइंग व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग? द पॉइंट जिसके बाद आपका वर्नियर का जीरो आ रहा है. सो इन दिस केस व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग? In this case, what is main scale reading? 0.6. अरे क्लियर है क्या? 0.6 के बाद आपका जीरो आ रहा है. दैट मीन्स दिस इज योर मेन स्केल रीडिंग. प्लस नाउ जिसको नहीं पता है, व्हाट इज एन? एन इज द मार्क विच इज कोइंसाइडिंग इन बोथ. रिपीटिंग अगेन, एन इज व्हाट? द मार्क विच इज कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल, जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है. In this particular diagram, if I say this one is coinciding with the main scale reading. If it is coinciding, you can say n is what? 1. Put the values 1. And what was the least count? We calculated it 0.01. And there was no error in the question, then it is 0. So this is going to be your reading. एरर्स कितने टाइप की होती है किसी को पता है? जीरो एरर्स पे कितने टाइप की होती है? दिस इज कॉल्ड एज जीरो एरर. आई थिंक यू नो पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर. दो ही टाइप की होती है. टू टाइप्स, पॉजिटिव सर एंड नेगेटिव. एब्सोल्यूट एरर भी तो इफ होती है. एरर इज पॉजिटिव, रिपीट अजय. सर एब्सोल्यूट एरर भी तो होती है. आपकी आवाज नहीं आई अजय पूरी तरह से मेरे पास. हाँ निखिल, एमएसआर इज 6 मीन्स इफ आई से दिस इज 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ डिवीजन and each division is what? 0.1. So what is the reading of main scale reading? 6 division means 0.6. अजय एब्सोल्यूट एरर्स भी होती है, ऐसे तो बहुत सारी एरर्स होती हैं, लेकिन मैं वर्नियर की एरर की बात कर रहा था. वर्नियर में जो एरर्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं. एक पॉजिटिव जीरो एरर, एक नेगेटिव जीरो एरर. ओके, इफ यू डोंट नो आई विल टेल यू. पॉजिटिव एरर्स का मतलब, पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब क्या होता है? ये जो हमने लेंथ मेजर करने के लिए लगाया था ना, ये जो पोर्शन हमने अटैच किया है इसके अंदर, ये अगर मैं इसको निकाल दूं और इसके जॉज को क्लोज करके ले आऊं, एकदम पास पास कर दूं, अटैच कर दूं, उसके बाद होना क्या चाहिए
कि ये जो जीरो है ये मेन स्केल जीरो के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। अगर ये कोइंसाइड कर रहा है, जीरो और जीरो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। अगर ये जीरो बाहर की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स इट इज ए पॉजिटिव जीरो एरर। अगर ये पीछे की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स इट इज नेगेटिव जीरो एरर। क्या ये दो बातें समझ में आई हमें? पॉजिटिव जीरो एरर अजय एंड नेगेटिव जीरो एरर। नाउ just tell me, I am asking to everyone, if zero is here when nothing is there, can I say my vernier is measuring something extra? अरे मेरी बात समझी, हमने कभी वेट किया है अपना मशीन पर जाकर? अगर मैं बोलूं किसी वेट मशीन पे मैं खड़ा हूं, मेरे खड़े होने से पहले ही वो शो कर रही है 0.2 kg, तो आपका एक्चुअल वेट आप कैसे निकालोगे? आपका जो भी वेट आएगा आप उसमें से 0.2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। यही होता है ना? दैट मीन्स अगर आपका इंस्ट्रूमेंट पॉजिटिव एरर शो कर रहा है, देन इट विल बी यूज्ड एज नेगेटिव साइन हियर। और अगर वो नेगेटिव एरर शो कर रहा है, देन यू विल यूज पॉजिटिव साइन हियर। नेगेटिव पॉजिटिव समझ में आया? आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। Now, what is the fundamental basic method to do it? Just trying to help you out in this. This is the last topic. After that, we will discuss the questions. Notice. Here I am saying, where is my zero? Just after the 1.3 mark. So your reading will be 1.3. That is clear. Now, what is actual length? This length you have to measure extra. Is it visible to you? This portion of length you have to measure. Because 1.3 is clear. After that, only this length is to be measured. So what I have assumed, after 1.3, I have assumed the point where they are coinciding is this point. This length I have assumed x, and from 0 to this length I have assumed y. So tell me what will be this distance d? What will be this distance d if it is visible to you? I am sure that it is visible. So what is your answer is 1.3 plus d. So d is what? Someone has answered maybe x minus y. Archana is saying 1 plus 3 plus x minus y. 1.3 plus. What is this x? How many boxes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. And each division is how much? 0.1. अरे ये तो हमने बोला था ना जनरली 0.1, बट आई एम टेकिंग 0.1, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। अभी तो मैं मान के चल रहा हूँ नॉर्मल। माइनस वाई इज व्हाट? हाउ मेनी बॉक्सेस? 1, 2, 3, 4, 5, 6। दैट इज 6 into what was the measurement of this one box? One VSD was how much? If you can remember, we solved it. One VSD was somewhere we have solved it. Na, one VSD. One VSD was 0.09. 0.09. Can you tell me what it will be final answer? Anyone? 1.36. Whatever it is, this is your answer. 1.36. दिस इज द आंसर। आई थिंक सब लोगों को एक बात समझ में आई, व्हाट इज द बेसिक। बेसिक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोइंसाइडिंग जीरो ढूंढते हैं। वो जीरो किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, वो नियरेस्ट वाला पॉइंट देखते हैं, वो हमारा 1.3 रहा। वहां से एक डिस्टेंस x मानते हैं, एक y मानते हैं, और दोनों के सबट्रैक्शन से सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज द जनरल मेथड। नाउ अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ओके, सर वो फर्स्ट एक्स क्वेश्चन थोड़ा ऑन योर पीछे भी स्क्रीन। ले सकते हैं। हाँ लीजिए। और पीछे?
क्वेश्चन पे। टू मिनट। श्रीराज, रोहित, एस, समृद्धि, सोम, वैष्णवी, वरुण, प्रशांत, पूजा, निखिल, पावनी, अर्चना, अंकुश, अमित, अजय, आदित्य, अभिनय। ओके। P1 has 10 equal divisions that correspond to 9 main scale divisions. Okay, tell me C1 is normal or abnormal? normal. So we can directly use the formula. We can directly use the formula for C1 if I say for C1, what will be the 0 is here, that is 2.5678. So reading is 2.8 plus. Identify the coinciding. Which point is coinciding? Can you anyone focus? Which point is coinciding? I think this is the coinciding point, no? So that will be 5, 6, 7. Okay. So that is 2.8 plus 7 into least count of the instrument. What is the least count of the instrument? They are saying 1 centimeter is divided into 10 equal divisions. किसी ने least count calculate किया? पॉइंट जीरो Least वन ही count. रहेगा. I think for this we have calculated already. Very good. 0.01. And there is no error. Can you find this? What is this going to be? 2.87. Okay, 2.87 is the reading of first calipers, C1. For second calipers, if I read C2, read the statement, the vernier scale of the other calipers C2 has 10 equal divisions that correspond to 11 main scale. That means 10 VSD is equals to 11 MSD. That is abnormal. Now we have to do the basics. First of all, this is the nearest point. From here, I have to assume some distances. Which is the coinciding point? किसी ने notice किया? Which point is coinciding? I think this point is coinciding, na? This is coinciding. So we have to assume some distances. Let's suppose this distance is x and this distance is y. What is my answer then? Reading will be main scale reading plus x minus y. Main scale reading is what? 2.8 plus x. Can anyone say? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यही है क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 into 0.1 minus y is what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7 into. Now, what is the measurement of 1 VSD that we have to calculate? And if I say here, अच्छा मेरी बात एक बात पता चल रही है, यहाँ पर मुझे लिखना क्या है 7 के साथ, व्हाट इज दी वन वर्नियर स्केल डिवीजन, एंड क्वेश्चन सेज 10 VSD is equals to 11 MSD. So 1 VSD is equals to what? 1.1 MSD. 1.1 MSD is 0.1 सेंटीमीटर. कितना आया ये? 0.11 सेंटीमीटर. 0.11. एक बार सॉल्व करेंगे इसको, दैट विल बी योर आंसर. कितना आया ये? B option. 2.8 प्लस 0.8 माइनस 0.77. 0.03. 2.8 plus 0.03, that is 8. Now take a break and tell me कितने लोगों को ये समझ में आ गया है 2.83 कैसे आया. अब इसी क्वेश्चन में वेरिएशन के लिए वो एरर दे सकते थे कि जीरो एरर हमारी कुछ दे सकते थे वो, तो हमारा जीरो एरर के साथ भी काम बन जाता, हम वो भी सॉल्व कर लेते. क्लियर एकदम. आगे बढ़ जाएं. हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन स्किप किया था शायद वर्नियर का, वो करते हैं. पहले एक बार ये करिए एक बार. दिस इज अगेन मल्टी करेक्ट. मल्टी करेक्ट. 3 minutes time you have, and please don't try to cheat because you have something data like na, this is 2015 advanced question, you can check with your PYQs book or something else. So 3 minutes. इसमें स्क्रू गेज का भी यूज हुआ है क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक
काइनामेटिक्स है, 1D और 2D। तो मुझे थोड़ा सा एक बात आप बता दें कि हम लोग सिर्फ क्वेश्चन के लिए आप जाएंगे या फिर आपको किसी 1D में, 2D में, रिलेटिव में, किसी में डाउट है? बिकॉज हमारे टॉपिक 1D, 2D एंड रिलेटिव होने वाले हैं कल। रिलेटिव भी दोनों में, 1D में भी और 2D में भी। डाउट है तो आप मुझे वो बता दें एक बार। क्वेश्चन ओनली सर। हाउ टू एनालाइज लॉन्ग क्वेश्चंस। ओके सो ठीक है, तो हम लोग फिर क्वेश्चंस पे डील करेंगे सो दैट वी कैन मैक्सिमाइज द टाइम। बट देयर आर सो मेनी कंसेप्ट रिलेटिव मोशन इन 2D। ओके, रोहित इज सेइंग। हम्म। क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम पीवाईक्यूज डन। हाँ, इन दिस चैप्टर ना, जो चैप्टर हम लोग आज कर रहे हैं, इसमें मैंने पीवाईक्यूज जानबूझ के सिलेक्ट किए हैं बिकॉज नथिंग इज बेटर देन पीवाईक्यूज इन दिस चैप्टर। कहीं भी किसी भी सोर्स में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं दे आर बेस्ट इन इन देयर ओन। वो सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं इंक्लूड किया है। बट बाकी के चैप्टर्स में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो हमें पीवाईक्यू से हट के भी पढ़ने हैं। तो दिस इज द रीजन व्हाई दे आर ऑल द क्वेश्चंस आर पीवाईक्यूज। और किसी चैप्टर में नहीं होंगे। बाकी सब चैप्टर्स हमारे ऐसे हैं जिसमें हमें अपनी तरफ से क्वेश्चंस क्रिएट करने होते हैं, बनाने होते हैं। ये थोड़ा सा ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चंस पीवाईक्यूज ही अच्छे हैं। ओके, किसी ने आंसर बना पाया अभी इसका? शुड आई स्टार्ट? बी एंड सी। हरिओम इज सेइंग बी एंड सी। ओके, लेट्स सॉल्व इट। क्वेश्चन इज सेइंग कंसिडर ए वर्नियर कैलिपर। वर्नियर क्वेश्चन बेसिक एक्सप्लेनेशन प्लीज फॉर टुमारो। ओके, एस। Okay, now just focus on the question. Question is saying vernier calipers in which each 1 centimeter on the main scale is divided into 8 equal divisions. That means, for example, I am saying this is a 1 centimeter mark and it is divided in 8 equal parts. So what is 1 MSD? One main scale division is what? 1/8 centimeter, can I say? This is very much clear. Now, and a screw gauge with 100 divisions on a circular scale. Okay, so there is one screw gauge done. 100 division on its circular scale. Very good. In the vernier calipers, 5 division of the vernier scale, 5 VSD coincide with 4 MSD. Done. Then can I say 1 VSD is equals to 4 by 5. 4 by 5 means 0.8 MSD. Is it correct? मैंने सही कैलकुलेट किया है? कैलकुलेशन चेक करना। So that is 0.8 and what is 1 MSD? 1/8 centimeter. So what is VSD? 0.1 centimeter. One more thing. मुझे VSD पता है, मुझे MSD पता है. Is it normal or abnormal? It is normal or abnormal. So least count will be. अरे ये नहीं बताया नॉर्मल है या abnormal है. Okay, two answers, Pavni and Hariom. This is normal. Normal. This is normal. If this is normal, then least count will be MSD minus VSD. एक बार बोलेगा कोई MSD और VSD का डिफरेंस करके कितना आया?
This is your 1 MSD. This is your 1 VSD. If I subtract it, then it will be 0.025 centimeter. This is the least count of the वर्नियर. ना वर्नियर का जितना भी डेटा था वो मैंने सॉल्व कर लिया. अब मेरी बात सुनना पहले आप लोग, एडवांस के लिए जब मैं बात करता हूं, कई बार ना जो जो डेटा मेंशन होता है क्वेश्चन में, हमें उसका जो भी यूज हम कर सकते बना के रख लिया मैंने अपने पास. अब इसके बाद वो बोल रहे हैं 1 complete rotation of the circular scale moves it by 2 division on the linear scale. आई थिंक स्क्रू गेज के बारे में आप सबको पता है. एंड लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज दे आर आस्किंग. लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज. सो फॉर स्क्रू गेज, what is the formula for least count? That is pitch divided by number of divisions in circular scale. I think you remember this formula, na? Pitch divided by number of divisions in circular scale. Now, pitch is what? Distance rotated by circular scale in one full rotation. I think you know this formula. What is pitch? And they are saying 1 complete rotation, circular scale moves by 2 divisions on the main scale. Can I say it will be 2 main scale divisions divided by number of circular turns? कितने थे इसमें? मेंशन है कहीं ना कहीं 100. So this is your formula of least count, 2 main scale division by 100. I am not saying this is the formula. This is the data. From data I can collect it. Very good. Now this main scale division for what? Screw gauge I am saying, na, that linear scale has how much division. Now question option says if the pitch of the screw gauge is twice of the least count of the vernier. Now option 1 I am checking. Option A I am checking. Option A is saying, क्या कह रहा है option A? If the pitch of the screw gauge is twice the least count of the vernier. What is the least count of the vernier? 0.025. If pitch is twice of that, then least count will be, if you make it twice, that will be 0.050 centimeter divided by number of turns are 100. कितना आएगा ये कोई सॉल्व करके बोलेगा? 0.0050 centimeter. And they are saying in mm. In mm it will be 0.050 mm. So option 1 is, in fact it will be 000, ना? 2 0 पीछे that will be. So that will be 00. Okay. इतना mm आना चाहिए आंसर. But हमारा दे रहे हैं 0.01. That is wrong. Second option saying if the pitch of the screw gauge is twice the least count. I think same data, na? The least count of the screw gauge will be 0.05 mm. That is correct option. Third option, if the least count of the linear scale of the screw gauge is twice the least count of the vernier calipers. Now, कितने लोग इस डेटा को समझ गए? ऑप्शन सी में वो क्या कह रहे हैं? If the least count of the linear scale of the screw gauge is twice the least count of the vernier. In terms of least count of the screw gauge we are dealing, main scale we are dealing. अगर ध्यान से सुनना, ये हमने निकाला था 2 into main scale division. Main scale division means least count of the linear scale. फोकस. दोबारा से सुनना, अगर कुछ समझ में ना आए तो पूछना एक बार, वरना गड़बड़ हो जाएगी. पूछ लेना अगर डाउट होगा. 2 into मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाई 100. मेन स्केल डिवीजन किसके? लीनियर स्केल के. अब वो मुझसे कह रहा है लीनियर स्केल का
लीस्ट काउंट मतलब एक डिवीजन is twice the least count of the vernier. That means least count is 2 into main scale division is 2 times of vernier calipers least count, that is 0.025 centimeter divided by 100. कोई सॉल्व करेगा इसको, कितना आएगा? 224 सर 0.001 0.001 वन सेंटीमीटर, 0.001 centimeter. It is in centimeter, but option is in mm, so that will be 0.01 mm. दैट मीन्स हमारा सी ऑप्शन सही है. जैसे ही सी ऑप्शन सही होता है, डी ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज बोथ आर सेम, डेटा इज सेम. किसी का कोई डाउट तो नहीं है इसमें? मूविंग फर्दर. सर ये 5 MSD कैसे लिख देता है ये बताना. 5 MSD कहाँ पर, किस लाइन में? वो ऊपर, सबसे ऊपर से नीचे, 5 VSD इज इक्वल टू 4 MSD. हाँ ये लिखा है, ये लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है 5 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल coincide with the वो 4 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल. देखा ना? सो 5 डिवीजन ठीक मीन्स है. 5 VSD, 4 MSD. डन. यस सर. This is also a P by Q. You can solve it. This question is of error. Two minute you have for this. क्या हम लोगों का वर्नियर का एक क्वेश्चन और रह गया था क्या पीछे? तो ये दो क्वेश्चन बचे हैं अभी वर्नियर के. चलिए करेंगे इसको भी. सॉल्व इट. दिस इज नॉट माइनस. दिस इज एक्चुअली इंटीजर टाइप क्वेश्चन. तो आंसर शुड बी सम इंटीजर. Even getting answer. 100. Answer should be an integer.
Archana is saying 4. Okay. Anyone else is solving? Okay, guys, are you solving the question or not? Are you trying? Okay, yes, yes. You should try, na? Hmm. Okay, so what is final? Finally, we are going to discuss some topic you asked motion, relative motion in 2D. Someone asked, and one more person asked something. I need to check. क्या पूछा था आपने? कैन यू रिपीट? किसी एक बच्चे ने और बोला था कुछ, मैं भूल गया हूँ क्या बढ़ाने के लिए बोला था। मैं भूल गया हूँ, मुझे मिलेगा भी नहीं अभी चैट में। एक बार फिर से बताना, आप में से किसी ने कुछ बोला था। एक तो रिलेटिव मोशन इन 2D था, और एक और था कुछ। एनालिसिस ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन, ओके। लॉन्ग क्वेश्चन मीन्स लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज लॉन्ग, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग ना? और सम पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन यू आर सेइंग, ओके ओके, डन। Question says the energy of a system is given this much. So E is equals to A square E raised to the power minus alpha T. Answer is 1. Projectile motion. Okay, yeah, projectile motion. This is E. And alpha is given. The measurement of A has some error 1.25%. If the error in the measurement of time is 1.5%, the percentage error in the value of E. Okay. That means we want to calculate delta E by E into 100. That is my percentage error. So delta E by E, we can achieve it only by taking log and then differentiate. That is the basic thing. Na? If I take log, it will become ln E is equals to ln. Can I say directly? Uh, okay, ln A square, and it will be plus ln E raised to the power minus alpha T. थोड़ा सा ओपन कर देना इसको, ln E to ln A, what it will become? माइनस अल्फा टी। अरे ये सब ठीक है ना? डिफरेंशिएट कर दो एक बार इसको। डिफरेंशिएट करोगे, इट विल बिकम डी ई बाई ई इज इक्वल्स टू 2 डी ए बाई ए माइनस अल्फा डी टी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना हमें? नाउ क्वेश्चन सेज that error in the measurement of A is given 1.25%. That is percentage error is given. So percentage error is given. That means we have to multiply by 100. So I have multiplied by 100 throughout the equation. Multiplied by 100. Now one more thing. Error in the measurement of time is 1.5%. Error in the measurement of time, can I conclude it is going to be delta T by T? For that, I am multiplying with time and dividing with time. मैंने टाइम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। नाउ वन थिंग इज दिस कि whenever question says find the percentage error, they are interested in maximum possible error. ये बात नोटिस करना। अभी किसी एक का एक आंसर आया था जिस वजह से ये गड़बड़ थी, 7.5। ओके, इट शुड बी एन इंटीजर आदित्य, इट शुड बी एन इंटीजर, योर आंसर इज नॉट इंटीजर। सो व्हाट आई एम सेइंग कि हमें क्या ध्यान देना है कि एरर दे आर आस्किंग मैक्सिमम पॉसिबल एरर।
for maximum possible error, if you remember, this minus sign we cannot take, we take all the time plus signs. So what it will be, for maximum errors we will write delta E by E into 100 is equals to 2 times delta A by A into 100 plus this delta T by T, delta T by T into 100. And can I see one T is extra, this T. Now put the values. If I put the values, 2, and this delta A by A into 100 is what? Notice what is this? 1.25, 1.25 plus delta T by T into 100, 1.5. And this T at T equals to 5 second, 5. This is 2.5 प्लस ये कितना बना, कितना आया ये, 7.5, कितना बना ये, सॉल्व करना एक बार, 10. 10. So what is the error in the measurement is 10%. For its delta T, where you are saying Nikhil? अल्फा की वैल्यू नहीं रखी क्या हम लोगों ने, ये कह रहे हो आप? अल्फा, अल्फा की वैल्यू नहीं रखी, अल्फा की वैल्यू कहीं रखो यहाँ पर। अल्फा की वैल्यू ये रही अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है बोलेगा कोई, क्वेश्चन चेक करके, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0.2, वी मिस्ड अल्फा, 0.2। एक बार अल्फा की वैल्यू रख के सॉल्व करना अभी, वी मिस्ड अल्फा हियर, हम लोगों ने अल्फा मिस किया। कोई अल्फा की वैल्यू रख के सॉल्व करना अभी, कितना आएगा? 4 आएगा 4। सॉल्व किया? यस सर। दिस इज 1.5 ना, दिस इज 2.5, दिस इज गोइंग टू बी 4। वेरी गुड, हम लोग अल्फा मिस कर गए बीच में। वेरी गुड, अल्फा ये रहा, अल्फा मिस हो गया, करेक्ट। तो दिस इज 4%, 4% इज योर करेक्ट आंसर। सो इंटीजर टाइप इज 4। It was also asked in some at some time in one more question. This is also integer type question. You have to find the value of n. ओके, आप लोगों ने आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे? मैंने लास्ट क्लास में बोला था ना आपसे 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कुछ सॉल्व किया आपने? कितने हुए, कितने करे आपने आज पूरे दिन में अभी तक? आप में से कोई प्रेजेंट था ओरिएंटेशन के टाइम पर? ओरिएंटेशन सेशन में कोई था आप में से? ओके, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए आप लोगों ने आज? नो, वरुण थे। वरुण, आपने कुछ सॉल्व किए क्वेश्चंस?
लोगों का ग्रुप बन गया है क्या? Yes, sir. ग्रुप बन गया है आपका ना? ओके, लेट मी चेक। मैं हूँ क्या ग्रुप में? एनीवन गेटिंग द आंसर ऑफ दिस? This is the applications of dimension, I think. Distance d depends, assumes the distance depends on the mass density. Mass density means rho, and intensity S, then frequency F. You can say A, B, and C, their powers. This is distance. Distance means dimension L. Here you can use some constant. So I am just writing some constant K. Rho is ml minus 3 power A. What is the dimension of, you are getting 5, Rohit? Okay. S, they are saying power per unit area. Hariom is getting 3. Okay. So dimension of S, if I write, this is power per unit area. Power is work done per unit time area. Dimension is ml square T minus 2. T and L square. So L square, it will be mt minus 3. चेक करना मैंने गलती ना की हो। mt-3 b, frequency is t-1 power c. You just need to compare, I think ना। कंपेयर करने के बाद I think you will get the answer. I don't think this is a difficult question. Now if I compare, L is 1 here and L is minus 3a. Okay, minus 3a is equals to 1. So a is equals to minus 1 by 3. This is the value of a. And we need what? S की power, that is b. So what is can we can compare with m. If I compare the power of m, that it will be a plus b is equals to 0. So b is equals to 1 by 3. The engineer find d is proportional to s raised to the power 1 by n. What is coming s raised to the power? It is coming s raised to the power, it is coming 1 by 3. So n is 3. N is equals to 3. Okay, only few. So you are getting minus 1. Okay, I think everyone is getting 3 na, most of you. 3 is the right answer. नाउ अब उन लोगों से थोड़ी देर बात कर लेते हैं। कुछ लोगों ने आज क्लास में बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं किया है। मैं अगर नाम लूँ तो मतलब क्या रीजन है ऐसे रिस्पॉन्स नहीं करने का? ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। तब तक जिन लोगों ने नहीं किया था, वो एक क्वेश्चन और बचा था, वो अपना वो करेंगे तब तक, उतनी देर तब तक मैं उन लोगों से बात करूंगा। ओके, सो नो प्रॉब्लम। जल्दी से इसको सॉल्व करिए। आई थिंक यू कैन सॉल्व इट।
सॉल्व इट इन योर होमवर्क। मैं अभी इस सेशन को एंड करता हूँ। कल की क्लास में हम लोग काइनेमेटिक्स के 1D 2D डिस्कस करेंगे। रिलेटिव मोशन इन 2D को थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जिनको बिल्कुल ही नहीं आता है उनके लिए बस एक फंडामेंटल थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे करना होता है। एक दो एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो कुछ दो तीन एग्जांपल शुरुआत में बहुत छोटे बेसिक से बताऊंगा थोड़ा सा। 2D रिलेटिव मोशन, आंसर इज बी। ओके आदित्य, आई डोंट नो द आंसर एक्चुअली, तो मे बी यू मे बी करेक्ट। इज एवरीवन गेटिंग बी? हरिओम इज सेइंग सी। Okay, so tomorrow we will discuss this question first, then we will move further. Okay, then bye. ये थोड़ा आसान चैप्टर है तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा अपन को। कल के चैप्टर में हम लोग। ओके देन, बाय। सर सर हाँ वो बेटा। एबनॉर्मल और नॉर्मल बता दो एक बार, पढ़ने इसके समझ में नहीं आया था कैसे क्या आपने। हाँ हाँ हाँ, देखिए मैं एक बार बताता हूँ जल्दी से। जैसे हमारी एक मेन स्केल ये है, दो स्केल थी वर्नियर वर्नियर कैलिपर्स में। हमारी एक मेन स्केल थी और एक हमारी वर्नियर स्केल थी। दो स्केल थी, ये दोनों ऊपर से अटैच होती है एक दूसरे के साथ। अब मैंने बोला वर्नियर स्केल में जो डिविजन्स होते हैं ये डिविजन्स है। अगर मैं बोलता हूं कि अगर मैं ये एक डिवीजन जो है ना इसको हम क्या बोलते हैं, मेन स्केल डिवीजन, और ये वर्नियर के डिविजन्स हैं। अगर मैं बोलूं अगर मेन स्केल का डिवीजन बड़ा है तो ये नॉर्मल की कैटेगरी में आता है। ध्यान देना क्या बड़ा है, अगर मेन स्केल का डिवीजन बड़ा है एज कंपेयर टू वर्नियर स्केल डिवीजन, सो दिस इज नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स। और अगर इसका उल्टा कर दूं मैं, मेरी वर्नियर स्केल के डिवीजन अगर बड़े हो जाएंगे, ये हो गए, अब ये बड़े बड़े डिवीजन हो गए वर्नियर स्केल के। सो अगर वर्नियर के डिविजन्स बड़े हैं किससे, मेन स्केल डिवीजन से, तो ये कैसा हो जाएगा, एबनॉर्मल। पहली बात तो हमें ये समझ में आ गई एबनॉर्मल क्या हुआ। अब इसको हम तुरंत कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मैंने बोला क्वेश्चन कहता है कि 9 MSD इज इक्वल टू 10 VSD। दैट मीन्स MSD के तो सिर्फ 9 और VSD के 10, तब ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। दैट मीन्स छोटे किसके डिविजन्स हैं, Redmi 9A। योर व्हाट इज योर नेम एक्चुअली, आप नाम वीएसडी बता दोगे तो बेटर हो। वीएसडी क्या के नाम है? हैं सर, मैं तो अजय है। सुमित। कि इसमें आपको समझ में आया कि कौन ये नॉर्मल हुआ या एबनॉर्मल हुआ? ठीक है सर, नॉर्मल होगा इसमें तो। नॉर्मल हुआ। अगर आप ऐसे ना समझ पाए तो हम ऐसे देख सकते हैं, MSD/VSD इज इक्वल टू 10/9। MSD के आगे जो नंबर आ रहा है वो बड़ा है। दैट ये रेशियो हुआ ना MSD और VSD का, तो रेशियो क्या 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब MSD कैसा हुआ, बड़ा। और अगर MSD बड़ा है तो ये कैसा है, नॉर्मल। दैट्स व्हाट आई हैव मेंशन्ड, MSD इज ग्रेटर देन VSD, तो इट इज नॉर्मल। और अगर MSD छोटा है तो इट इज एबनॉर्मल। क्लियर ना? यस सर। ओके, एनी अदर डाउट? नो, थैंक यू सर। ओके बेटा। आई एम एंडिंग द मीटिंग ना।